ராதே ராதே. நம்ம சத்குருநாதருடைய ஒரு பரம கிருபையினால ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் கத்துருக்கோம். 3வது ஸ்கந்தம் ஆரம்பித்து நம்ம 2 அத்தியாயங்கள் கத்துண்டோம். 2வது அத்தியாயத்தில் விதுரருடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் உத்தவர் எப்படி பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கிருஷ்ணனுடைய அழகான ரூபத்தையும் அவருடைய கருணையெல்லாம் ஸ்மரித்து பார்க்குறார். அதுக்கப்புறமா கிருஷ்ண லீலைகளை சொல்ல ஆரம்பித்து ராசலீலை வரைக்கும் சொன்னார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த 3வது அத்தியாயத்தில் இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்க போகிறதுல இதற்கு மேலே உள்ள கிருஷ்ண சரித்திரங்களெல்லாம் சொல்கிறார். அப்படி விரஜத்திலேருந்து கிருஷ்ணன் கிளம்பி மதுரைக்கு வந்ததும் முதல்ல கம்சனை வதம் பண்ணுறான் பகவான். வதம் பண்ணிட்டு அப்பா அம்மாவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இறந்து போன கம்சனோட உடலை அப்படி தரன்னு தரையில் இழுத்துட்டு வரான் பகவான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அதுக்கப்புறமா சாந்தீபினி அப்படிங்கிற குரு இடத்துல போய் வேதங்களெல்லாம் கற்றுக்கிறான் பகவான். சக்ருத் புரோக்தம் அப்படின்னு ஒரு தரம் சொன்னதுமே எல்லா வேதங்களையும் பகவான் கற்றுக்கிறானாம். 64 நாட்களில் 64 கலைகளையும் பகவான் கற்றுக்கிறான். குரு தட்சிணையாக குருவுடைய இறந்து போன பிள்ளையான அந்த குழந்தைய பஞ்சஜனன்கிற அசுரன் இடத்துல இறந்து போன அந்த குழந்தைய திரும்பவும் மீட்டு கொண்டு கொடுக்குறான் குரு தட்சிணையாக. அதுக்கப்புறமா ருக்மிணியோட அழகுனால ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு அப்படி ருக்மிணியோட சுயம்பரத்துக்கு எல்லா ராஜாக்களும் வந்திருக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு கருட பட்சியானது அமிர்தத்தை அபகரிச்சுட்டு போகுமோ அது மாதிரி பகவான் என்ன பண்ணுறார், ருக்மிணியை அபகரிச்சுட்டு போய் துவாரகையில் போய் விவாகம் பண்ணிக்கிறார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அடுத்ததாக நாக்னஜிதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நக்னஜித் மகாராஜனுடைய பெண்ணான சத்யா அப்படிங்கிற பெண்ணை பகவான் 7 முரட்டு காளைகளை அடக்கி பகவான் விவாகம் பண்ணிக்கிறான். அதுக்கப்புறமா எப்படி ஒரு சாமானிய மனுஷனை போல எப்படி மனைவியை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு ஆசைப்படுவாளோ அது மாதிரி பகவான் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியான சத்யபாமா ஆசைப்பட்டா அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்வர்கலோகத்திலேருந்து பாரிஜாத மரத்தை எடுத்துட்டு வரான். எப்போ அப்படின்னா அதிதி மாதாவனுடைய குண்டலங்களை நரகாசுரன் அப்படிங்கிறவன் அபகரிச்சுட்டு போனதுனால அதை திரும்பவும் கொண்டு கொடுக்கறதுக்காக ஸ்வர்கலோகம் போகிறார் பகவான். அப்போ தான் இந்த பாரிஜாத்த மரத்தை எடுத்துட்டு வரார். அப்போது பகவான் தன்னுடைய அம்மாவுக்கு உபகாரம் பண்ண வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறத கூட பார்க்காம இந்திராணி தூண்டி விடுறாளாம். அதனால இந்திரன் பகவானோட யுத்தம் பண்ணிட்டு போகிறான் பாரிஜாதத்தை எடுத்துட்டான் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்படி இந்திரனோட யுத்தம் பண்ணி பகவான் அந்த பாரிஜாத்த மரத்தை எடுத்துன்னு வரான். அப்போ ஸ்ரீ சுகர் சொல்கிறார், கிரீடா மிருகோ நூனமயம் வதூனாம் அப்படின்னு இந்திரன் தன்னுடைய மனைவியோட கையில் ஒரு விளையாட்டு பொருள் போல இருந்தான். பகவான்கிட்டயே அப்படி யுத்தம் பண்ணிட்டு வந்தானே அவ சொன்னதுனால அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படி பூமாதேவியோட பிள்ளையான நரகாசுரனை வதம் பண்ணி பகவான் அந்தப்புறத்துக்குள்ளே போகிறான். அவனுடைய அந்தப்புறத்துக்குள்ளே 16,108 பெண்களை அப்படி சிறை பிடிச்சி வச்சிருக்கானாம் நரகாசுரன். அவர்கள் எல்லாரையும் பகவான் விடுவிக்கிறான். அப்படி அவர்களை விடுவிக்கும் பொழுது அவர்கள்லாம் கிருஷ்ணனை பார்த்து ஒரே சமயத்தில் வெட்கப்பட்டாலாம். எல்லாரும் ஒரே சமயத்தில் பகவானையே பத்தியாக அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. அதனால பகவான் என்ன பண்ணுறான், ஒரே முகூர்த்தத்தில் 16,108 ரூபங்கள் எடுத்துட்டு அவ்வளவு மாளிகைகளில் பகவான் அவர்களை விவாகம் பண்ணிக்கிறான். அவர்களோட குடும்பம் நடத்துகிறானாம். ஒவ்வொரு மகிழ்ச்சி இடத்துலையும் தனக்கு துல்லியமாக 10 குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அதுக்கப்புறமா காலயவனன், ஜராசந்தன், ஷால்வன் போன்ற துஷ்டர்கள்லாம் பகவானோட யுத்தம் பண்ணிட்டு அப்படி வரும்பொழுது அவர்கள் எல்லாரையும் பகவான் வதம் பண்ணுறான். அதற்கும் மேலே சம்பரன், திவிதன், முரன், பல்வலன், பாணன் அப்படிங்கிற அசுரர்களாலையும் பகவானும் வதம் பண்ணி பலராமர் மூலமாகவும் சில பேரை வதம் பண்ண வைக்கிறான். அப்போ உத்தவர் சொல்கிறார், விதுரரே உங்களுடைய அண்ணாவுடைய பசங்களான அந்த கௌரவர்களுடைய பட்சத்தில் சேர்ந்துருந்த ராஜாக்கள் அனைவரையும் அப்படி மகாபாரத யுத்தத்தும் போது அவர்களாம் வதமாகும்படி பண்ணான் பகவான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். இப்போ மகாபாரத போர் முடிஞ்சு அந்த யுத்த களத்தில் அப்படி துரியோதனன் தொட முறிஞ்சு அப்படி படுத்துன்னு இருக்கான். எதனால அப்படின்னா குமந்திர பாக்கேன அப்படின்னு கர்ணன், துஷாசனன், சகுனி போன்றவர்களுடைய ஒரு கெட்ட துர்போதனையினால துரியோதனன் தன்னுடைய ஆயுசையும் எல்லா செல்வத்தையும் இழந்து அப்படி தொடமுறிஞ்சு படுத்துன்னு இருக்கும் பொழுது கூட பகவான் அதை பார்த்தும் கூட நனந்த பஷ்யன்னு அப்படிங்கிற அவ்வளவா சந்தோஷப்படலையாம். பகவான் மனசில் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா கியான் புவோயம் க்ஷபிதோரு பாரோ அப்படின்னு நினைக்கிறாராம். அதாவது பூபாரமானது ரொம்ப குறைச்சலாக தான் இப்போ குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறார். 18 அக்ஷௌகினி சேனைகள் வதமாயிருக்கு மகாபாரத போரில். எவ்வளவோ ராஜாக்கள்லாம் இறந்து போயிருக்கா, கௌரவர்கள் எல்லாரும் இறந்து போயிருக்கா. ஆனாலும் பகவான் ஏன் அப்படி நினைக்கிறார் அப்படின்னா தன்னை சேர்ந்த அந்த ஒரு யாதவ குலம் இருக்கு இல்லையா, அவிஷஹ்யம் துர்விஷகம் ஆஸ்தே அப்படிங்கிறார். அதாவது யாராலையுமே அவர்களை ஒன்றுமே பண்ண முடியாதாம். கிருஷ்ணனுடைய சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிறதுனால அப்பேற்பட்ட பலம் பொருந்தியவர்கள், அதுலேயும் எண்ணிக்கையிலேயே அடங்காதவர்களாம். அவ்வளவு யாதவர்கள் இருக்கிறதுனால அந்த யாதவ குலமும் அழிஞ்சாதான் பூபாரமானது குறையும் அப்படின்னு பகவான் நினைக்கிறான்.
நைஷாம் வதோபாய இயான் அதோன்யோ அப்படின்னு நினைக்கிறான். அதாவது இவர்களை வதம் பண்ணுறதுக்கு இதை காட்டிலும் வேற ஒரு உபாயம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறான். என்ன உபாயம் அப்படின்னா, ஒரு கால் அவர்கள் எல்லாரும் மதுபானம் பண்ணி கண்கள்லாம் அப்படி செவந்து ஒருவருக்கொருவர் ஒரு வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு அதனால ஒரு சண்டை ஏற்பட்டு அவர்கள் ஒருத்தரை அடிச்சுண்டு அப்படி அழிஞ்சாதான் அந்த யாதவ குலமானது அழியுமே தவிர வேற யாராலையும் அந்த யாதவ குலத்தை அழிக்க முடியாது அப்படின்னு பகவான் மனசுல நினைக்கிறான். அதனால நான் வைகுண்டம் கிளம்பி போயிட்டேன் அப்படின்னா இந்த யாதவர்களும் இப்படி ஒரு வியாஜத்துல அவர்களும் இந்த பூமியை விட்டு கிளம்பிடுவா அப்படின்னு பகவான் நினைக்கிறார். அப்போ நம்ம நினைப்போம், யாதவர்கள்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்கள் தானே, அவர்கள் எப்படி பூமாதேவிக்கு பாரமா ஆவா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? ஒரு மகான் ரொம்ப அழகா ஒரு சுவாரஸ்யமா ஒரு வியாக்கியானத்துல சொல்றார், யாதவர்கள்லாம் அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்கிறதுனால ஒரு கால் பகவான் வைகுண்டத்துக்கு கிளம்பிட்டார் அப்படின்னா அவர்கள் எல்லாரும் ஒரே சமயத்துல அப்படி பூமியில விழுந்து அழுவா இல்லையா, அந்த பாரத்தை பூமாதேவியால தாங்க முடியாது, அதைத்தான் பகவான் பூபாரம்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னு அழகா சொல்றார். அப்போ மனசுல இந்த மாதிரி பகவான் சங்கல்பம் பண்ணின்றதும் முதல்ல என்ன பண்றாருன்னா யுதிஷ்டருக்கு ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறார். அதுக்கப்புறமா உத்தரையோட கர்ப்பத்துல வளரக்கூடிய அந்த சிசு இருக்கு இல்லையா, பாண்டவ வம்சத்துக்கு ஒரே பீஜமான அந்த சிசு அஸ்வத்தாமாவுடைய ஒரு பிரம்மாஸ்திரத்தினால அது தாக்கப்பட்ட பொழுது அந்த குழந்தையும் பகவான் காப்பாற்றி கொடுக்கிறார். அதற்கு மேலே யுதிஷ்டரை 3 அஸ்வமேத யாகங்கள் பண்ண வச்சு அவரை சௌக்கியமாக வாழ வைக்கிறாராம். பகவானும் துவாரகையில வேதம் எப்படி சொல்லியிருக்கோ அது போல கிரகஸ்த தர்மங்களெல்லாம் அப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணிண்டு சாங்கிய யோகத்தை கடைபிடிச்சு எந்த ஒரு விஷய சுகங்கள்லையும் பற்று இல்லாதபடி அப்படி வாழ்ந்துட்டு வரார். தன்னுடைய ஒரு அழகான புன்சிரிப்பினாலையும் அழகான ரூபத்தினாலையும் இனிமையான ஒரு பேச்சினாலையும் எல்லா மகிழ்ச்சிகளுக்கும் துவாரகாவாசிகளுக்கும் அப்படி சந்தோஷத்தை கொடுத்துண்டு பகவான் சௌக்கியமாக வாழ்ந்துட்டுருக்கான் துவாரகையில் அப்படிங்கிறார். இப்படி பல வருஷங்கள் பகவான் வாழ்ந்து கடைசியில் லோக விஷயங்கள்லாம் பகவானுக்கு ஒரு விரக்தியானது ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறார். இந்த இடத்துல ஸ்ரீ சுகர் சொல்கிறார், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கே அப்படி லோக விஷயங்களெல்லாம் விரக்தி ஏற்பட்டது அப்படின்னா ஒரு சாமானிய மனுஷன் பகவானை அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் எப்படி இந்த லோக விஷயங்களெல்லாம் பற்று வைக்க முடியும் அப்படின்னு அழகாக கேட்குறார். அப்போ ஒரு சமயம் அப்படி துவாரகையில் பகவான் வாசம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது எது குமாரகர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணனுடைய குழந்தைகள்லாம் ஒரு சமயம் சேர்ந்து விளையாடுறா. அதுபோது அங்கேருந்து ரிஷிகளுக்கெல்லாம் அவர்கள் அபச்சாரப்பட்டுடுறா. உடனே அந்த ரிஷிகள்லாம் எதுக்குலமே அழிஞ்சு போகணும் அப்படின்னு ஒரு சாபத்தை கொடுத்துடுறா. ஸ்ரீ சுகர் சொல்கிறார், பகவன் மத கோவிதாகா அப்படின்னு பகவானுடைய சங்கல்பம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்ததுனால தான் அவர்களும் அப்படி ஒரு சாபத்தை கொடுத்தா அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அப்போ இந்த சாபம் ஏற்பட்டு ஒரு சில மாதங்கள் கழித்து தெய்வாதீனமாக இந்த யாதவர்கள் விஷ்ணிகள் எல்லாரும் ரதத்தில் ஏறிண்டு ஒரு சமயம் பிரபாச க்ஷேத்திரத்துக்கு போகிறா. அங்கே போய் அந்த பிரபாச தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணி தேவர்கள் பித்ருக்கள் அப்புறமா ரிஷிகள் எல்லாருக்கும் அந்த ஜலத்தினாலேயே தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணுறா. பண்ணிட்டு பிராமணர்களுக்கெல்லாம் நிறைய தானங்கள் கொடுக்குறாளாம். கோதானம், பூமி தானம், ஸ்வர்ணதானம், வஸ்திரதானம், கன்னிகாதானம், அன்னதானம் கொடுக்குறா. நிறைய படுக்கைகள்லாம் கொடுக்குறா, மர உரிகள்லாம் கொடுக்குறா. அவர்களுக்கு வாகனம், ரதங்கள், அதுக்கப்புறமா யானைகள்லாம் தானம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் மனசால அப்படி கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு கிருஷ்ணனுக்கே அர்ப்பணம் பண்ணுறாளாம். அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா கோ விப்ரார்த்தாசவஹா அப்படின்னு ஸ்ரீ சுகர் சொல்கிறார். பசுக்களையும் பிராமணர்களையுமே அப்படி உயிராக கொண்டவர்களாம் அந்த யாதவர்கள். அதனால அத்தகைய தானங்கள்லாம் பண்ணி அவர்களுக்கு தலையால் நமஸ்காரமும் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத சொல்லி அதோட இந்த 3வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ண சரித்திரமானது இங்கே நிறுத்திட்டு அடுத்தது மேலே உத்தவர் 4வது அத்தியாயத்தில் இதற்கு மேலே உள்ள கதைகளெல்லாம் சொல்ல போகிறார். நம்ம இன்னைக்கு இந்த 3வது அத்தியாயத்தில் கற்றுக்கலாம். கலயே சுந்தராகாரம் சதைக பிரியதர்சனம் அஜ்ஞானநாசகம் தேவம் சத்குரும் முரளீதரம் முரளீமண்டிதகரகமலம் முனிஜனமோகனம் व्यत्यस्तपादं वनमालाधारिणं प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। तृतीयोऽध्यायः। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोः चिकीर्षयाशं बलदेवसंयुतः निपात्य तुङ्गात् रिपुयूतनाथं हतं व्यकर्षद् व्यसुम् ओजसोर्व्याम् व्यसुम् ओजसा उर्व्याम् सान्दीपनेः सकृत्प्रोक्तम् ब्रह्म अधीत्य सविस्तरम् तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रम् मृतं पञ्चजनोदरात् पञ्चजन उदरात् समाहुता भीष्मककन्ययाये श्रियः सवर्णेन बुभूषया येषाम् गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागम् जह्रे पदं मूर्ध्नि दधत्सुपर्णः ककुद्मतो विद्धनसोदमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितीम् उवाह तद्भग्नमानान् अपि गृध्यतो ज्ञान जघ्ने अक्षतः
शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः जघ्ने क्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः जघ्ने क्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः प्रियं प्रभुः ग्राम्य इव प्रियाया प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियायाः प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियायाः विधित्सुः आर्च्छत् द्युतरुं यदर्थे विधित्सुरार्च्छद्युतरुं यदर्थे विधित्सुरार्च्छद्युतरुं यदर्थे वज्री आद्रवत्तं सगणो रुषान्धः वज्र्याद्रवत्तं सगणो रुषान्धः वज्र्याद्रवत्तं सगणो रुषान्धः क्रीडामृगो नूनम् अयं वधूनां क्रीडामृगो नूनमयं वधूनां क्रीडामृगो नूनमयं वधूनां सुतं मृदे खं वपुषाग्रसन्तं सुतं मृधेकं वपुषाग्रसन्तं सुतं मृधेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरित्र्या दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितः तत्तनयाय शेषम् आमन्त्रितः तत्तनयाय शेषम् आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषम् दत्त्वा तद् अन्तःपुरम् आविवेश दत्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश दत्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिम् आर्तबन्धुम् कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकैः व्रीडानुरागप्रहितावलोकैः व्रीडानुरागप्रहितावलोकैः आसां मुहूर्त एकस्मिन् आसां मुहूर्त एकस्मिन् आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां नानागारेषु योषितां नानागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणीन् सविधं जगृहे पाणीन् सविधं जगृहे पाणीन् अनुरूपः स्वमायया अनुरूपस्वमायया अनुरूपस्वमायया तासु अपत्यानि अजनयत् तास्वपत्यान्यजनयत् तास्वपत्यान्यजनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः आत्मतुल्यानि सर्वतः आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश एकैकस्यां दश दश एकैकस्यां दश दश प्रकृतेः विभुभूषया प्रकृतेर्विबुभूषया प्रकृतेर्विबुभूषया कालमागध शाल्वादीन् कालमागधशाल्वादीन् कालमागधशाल्वादीन् अनीकैरुन्धतः पुरम् अनीकैरुन्धतः पुरम् अनीकैरुन्धतः पुरम् अजीघनत् स्वयं दिव्यम् अजीघनत् स्वयं दिव्यम् अजीघनत् स्वयं दिव्यम् स्वपुंसां तेज आदिशत् स्वपुंसां तेजादिशत् स्वपुंसां तेजादिशत् शम्बरं द्विविधं बाणं शम्बरं द्विविधं बाणं
शम्बरं द्विविधं बाणं मुरं बल्वलम् एव च मुरं बल्वलमेव च मुरं बल्वलमेव च अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीन् अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीन् अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीन् अवधीत् कांश्च घातयत् अवधीत् कांश्च घातयत् अवधीत् कांश्च घातयत् अथ ते भ्रातृपुत्राणाम् अथ ते भ्रातृपुत्राणाम् अथ ते भ्रातृपुत्राणाम् पक्षयोः पतितान् नृपान् पक्षयोः पतितान् नृपान् पक्षयोः पतितान् नृपान् चचालभूः कुरुक्षेत्रम् चचालभूः कुरुक्षेत्रम् चचालभूः कुरुक्षेत्रम् येषाम् आपततां बलैः येषामापततां बलैः येषामापततां बलैः सकर्णदुःशासनसौबलानां 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 कुमन्त्रपाकेन हतः श्रियायुषम् कुमन्त्रपाकेन हतः श्रियायुषम् कुमन्त्रपाकेन हतः श्रियायुषम् सुयोधनं सानुचरं शयानम् सुयोधनं सानुचरं शयानं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुम् उर्व्यां नननन्द पश्यन् भग्नोरुमुर्व्यां न ननन्द पश्यन् भग्नोरुमुर्व्यां न ननन्द पश्यन् कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्द्रोण भीष्म अर्जुन भीममूलैः यद्द्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः यद्द्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादश अक्षौहिणिको मदंशैः अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैः अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैः आस्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम् आस्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम् आस्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम् मिथो यदैषां भविता विवादो मिथो यदैषां भविता विवादो मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामद आताम्रविलोचनानां मध्वामदाताम्रविलोचनानां मध्वामदाताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाय इयान् अतोऽन्यो नैषां वधोपायय्यानतोऽन्यो नैषां वधोपायय्यानतोऽन्यो मय्युद्यते अन्तर्दधते स्वयं स्म मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म एवं सञ्चिन्त्य भगवान् एवं सञ्चिन्त्य भगवान् एवं सञ्चिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नन्दयामास सुहृदः नन्दयामास सुहृदः नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन् साधूनां वर्त्मदर्शयन् साधूनां वर्त्मदर्शयन् उत्तरायां धृतः पूरोः उत्तरायां धृतः पूरोः उत्तरायां धृतः पूरोः वंशः साधु अभिमन्युना वंशः साध्वभिमन्युना वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रौणि अस्त्रसञ्चिन्नः स वै द्रोण्यस्त्रसञ्छिन्नः स वै द्रोण्यस्त्रसञ्छिन्नः पुनः भगवता धृतः पुनर्भगवता धृतः पुनर्भगवता धृतः अयाजयत्
धर्मसुतम् अयाजयद्धर्मसुतम् अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधैः त्रिभिः विभुः अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्ष्माम् अनुजैः रक्षन् सोऽपि क्ष्मामनुजैरक्षन् सोऽपि क्ष्मामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णम् अनुव्रतः रेमे कृष्णमनुव्रतः रेमे कृष्णमनुव्रतः भगवानपि विश्वात्मा भगवानपि विश्वात्मा भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः 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 कामांसि सेवे द्वार्वत्याम् कामांसि सेवे द्वार्वत्याम् कामांसि सेवे द्वार्वत्याम् असक्तः साङ्ख्यम् आस्थितः असक्तः साङ्ख्यमास्थितः असक्तः साङ्ख्यमास्थितः स्निग्ध स्मित अवलोकेन स्निग्धस्मितावलोकेन स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया वाचा पीयूषकल्पया वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेण अनवद्येन चरित्रेणानवद्येन चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना श्रीनिकेतेन चात्मना श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकम् अमुं चैव इमं लोकम् अमुं चैव इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रमयन् सुतरां यदून् रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्त रेमे क्षणदया दत्त रेमे क्षणदया दत्त क्षणस्त्री क्षणसौहृदः क्षणस्त्री क्षणसौहृदः क्षणस्त्री क्षणसौहृदः तस्यैवं रममाणस्य तस्यैवं रममाणस्य तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् संवत्सरगणान् बहून् संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु गृहमेधेषु योगेषु गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत विरागः समजायत विरागः समजायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् दैवाधीनः स्वयं पुमान् दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विस्रम्भेत योगेन को विस्रम्भेत योगेन को विस्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः योगेश्वरमनुव्रतः योगेश्वरमनुव्रतः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिः यदुभोजकुमारकैः 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 कोपिता मुनयः शेपुः कोपिता मुनयः शेपुः कोपिता मुनयः शेपुः भगवन्मतकोविदाः 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 ततः कतिपयैः मासैः ततः कतिपयैर्मासैः ततः कतिपयैर्मासैः वृष्णिभोज अन्धकादयः वृष्णिभोजान्धकादयः वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा ययुः प्रभासं संहृष्टा ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैः देवविमोहिताः रथैर्देवविमोहिताः
रथैर्देवविमोहिताः तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषींश्चैव तदम्भसा ऋषींश्चैव तदम्भसा ऋषींश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः गावो बहुगुणा ददुः गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यं रजतं शय्याम् हिरण्यं रजतं शय्याम् हिरण्यं रजतं शय्याम् वासांसि अजिनकम्बलान् वासांस्यजिनकम्बलान् वासांस्यजिनकम्बलान् यानं रथान् इभान् कन्या यानं रथान् इभान् कन्या यानं रथान् इभान् कन्या धरां वृत्तिकरीमपि धरां वृत्तिकरीमपि धरां वृत्तिकरीमपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो अन्नं चोरुरसं तेभ्यो अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणम् दत्त्वा भगवदर्पणम् दत्त्वा भगवदर्पणम् गोविप्रार्थासवः शूराः गोविप्रार्थासवः शूराः गोविप्रार्थासवः शूराः गोविप्र अर्थ असवः शूराः प्रणेमुः भुवि मूर्धभिः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः எல்லாரும் இந்த அத்தியாயத்தை ஒரு தரம் சேர்ந்து பாராயணம் பண்ணலாம். உத்தவ உவாச்ச ततः सागत्य पुरं स्वपित्रोः चिकीर्षया बलदेव संयुतः निपात्य तुङ्गाद् रिपुयूतनातं हतं व्यकर्षद् व्यसुम् ओजसोर्व्यां सान्दीपनेः सकृत्प्रोक्तं ब्रह्माधीत्य सविस्तरं तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात् समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जह्रे पदं मूर्ध्नि सदत्सुपर्णः ककुद्मतो विद्धनसोदमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितीम् उवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतोज्ञान् जघ्ने क्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधित्सुरार्चत द्युतरुं यदर्थे वज्र्याद्रवत्तं सगणोरुषान्धः क्रीडामृगो नूनमयं वधूनां सुतं मृधेकं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं दरिद्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरम् आविवेश तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहो प्रहर्ष व्रीडानुरागप्रहितावलोकैः आसामुहूर्तये कस्मिन् नानागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणीन् अनुरूपस्वमायया तास्वपत्यानि अजनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया कालमागधशाल्वादीन् अनीकैरुन्धतः पुरम् अजीघनत् स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत् शम्बरं द्विविधं बाणं मुरं बल्बलमेव च अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीन्
अवधीत् कांश्च घातयत् अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान् चचाल भूः कुरुक्षेत्रम् येषाम् आपततां बलैः सकर्णदुःशासनसौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम् सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुर्व्यां नननन्द पश्यन् कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्द्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैः आस्ते बलं दुर्विशहं यदूनां मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो मय्युद्यते अन्तर्दधते स्वयं स्म एवं सञ्चिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन् उत्तरायां धृतः पूरोः वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रौण्यस्त्रसञ्चिन्नः पुनर्भगवता धृतः अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्ष्माम् अनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः कामान् स्विषेवे द्वार्वत्याम् असक्तः साङ्ख्यमास्थितः स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्त क्षणस्त्री क्षणसौहृदः तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विस्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिः यदुभोजकुमारकैः कोपिता मुनयः शेपुः भगवन्मतकोविदाः ततः कतिपयैर्मासैः वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देवविमोहिताः तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषींश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्यजिनकम्बलान् यानं रथान् इभान् कन्या धरां वृत्तिकरीमपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोविप्रार्था सवः शूराः प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरु महाराज की जय. இந்த அத்தியாயம் நம்ம படிச்ச ராகம் ஆனந்த பைரவி. நம்ம அடுத்த செஷன்ல 4வது அத்தியாயத்தை கத்துக்கலாம். ராதே ராதே. Radhe Radhe. By the grace of our Guru Maharaj, we have started learning Srimad Bhagavata Mahapuranam, and we have started learning the 3rd skanda, and we have finished 2 chapters. In the 2nd chapter, we saw how Uddhava begins to answer all the questions of Vidura. He reminisced about Bhagavan's beautiful form and his compassion, and then started narrating the Krishna Charitram he had told until the Rasa Leela in the 2nd chapter. And today in this 3rd chapter, he continues with the further Leelas of Krishnavatara. He says,
As Bhagavan left Braja and went to Mathura, he first killed Kamsa, and to give joy to his parents Vasudeva and Devaki, he dragged the dead body of Kamsa on the ground, and then he went to Sandipani Guru and learnt all the Vedas. Sri Shuka says Sakrit Proktam, that is, even when uttered once, Bhagavan learnt all the Vedas, and he learnt all the 64 arts in 64 days. And as Guru Dakshina, he gave back to his Guru his dead son who was killed by the Asura called Panchajana. And then he went to Rukmini's Swayamvara, where all the kings had come there, being attracted by the beauty of Rukmini. And just as Garuda, a bird, would snatch away the pot of Amrita, Bhagavan abducted Rukmini and went to Dwaraka and married her. And he also married Nagnajiti, who is the daughter of King Nagnajit, who is called as Satya, by subduing the 7 violent bulls. And then, just as an ordinary man would like to please his wife, Bhagavan also, who wanted to please his Mahishi Satyabhama, he went to Swarga Loka and brought back the Parijata tree because Satyabhama wanted to have it. And when Krishna did this was when he went to Swarga Loka to give back the kundalas or earrings of Aditi, who is Deva Mata, which had been snatched by Narakasura. And Indra did not even consider the fact that Krishna had come to help his mother. He went to a battle with Krishna because Krishna had taken away the Parijata, being prompted by his wife Indrani. And so Krishna had to fight a battle with Indra and take back the Parijata tree. And Sri Shuka says, Krida Mrigo Noonam Ayam Vadhunam. He says Indra was just a mere toy in the hands of his wife because he went to fight with Bhagavan himself because he was prompted by Indrani. After killing Narakasura, who is Bhuma Devi's son, Bhagavan went into his Antapura, where he saw that 16,108 women were held captive by Narakasura. So Bhagavan released all of them. When Bhagavan released all of them, all the women, at the same time they felt bashful upon seeing Krishna, and they wished in their hearts at the same time to have Krishna as their husband. And so what Bhagavan did was, in the same Muhurta, Bhagavan married all of them by taking 16,108 forms in so many palaces, and he led the life of a householder with all of them. And he begot 10 children from each of them who were all equal to Krishna in many respects. And then when Kala Yavana, Jarasandha and others like Shalva came to a battle with Krishna, he killed them all. He also killed other asuras like Shambara, Dvivida, Mura, Balvala, Bana. Some of them he killed himself, and some of them he killed them through Balarama. And then now Uddhava says, O Vidura, all the evil kings who had taken the sides of your brother's sons, the Kauravas, Krishna saw to it that they were all killed in the Mahabharata war. And now Duryodhana was lying there on the battlefield with his thighs broken because of the Kumantra Pakena. He says because of the ill counseling of all his friends and relatives like Karna, Dushasana and Shakuni, Duryodhana had lost his lifespan and also all his wealth, and he was now lying with his thighs broken on the Mahabharata war field. And even after seeing that, Krishna did not feel very happy, says Sri Shuka, na nananda pashyan, because Bhagavan thought, Kiyan bhuvoyam kshapitoru bharo, that is, the burden of Mother Earth had not been reduced much by all this, Bhagavan thought. Though 18 Akshauhini Senas had been killed in the Mahabharata war, so many kings had been killed, all the Kauravas had been killed, well still Bhagavan thought like this because still his Yadava Kula, which belonged to Krishna, was still there. It was uncountable in number, and also they were irresistible in might. Durvishaham yadaste, he says. And Bhagavan thought, Naisham vadhopaya iyan atonyo. He thought there is no other way other than this to destroy all the Yadavas. And what was that? Only if they became drunk with wine and with their eyes reddened because of that, if any argument arised among them and a fight arised because of that, they would kill each other because of such a fight. And that is the only way in which the Yadavas could be destroyed, not by any other means, because they belonged to Krishna and they were irresistible, that nobody else could kill them. So Bhagavan thought, if I leave to Vaikuntha, all these Yadavas also would disappear from this world in this pretext. And now we might think all the Yadavas are only devotees of Krishna, so how could they become a burden to Mother Earth? So one Mahan tells very interestingly in his Vyakhyana, he says, if Krishna had left to Vaikuntha, all these Yadavas who were uncountable in number would fall to the ground and cry very bitterly, and Bhuma Devi cannot bear this burden. So that is why he mentions them as Bhubara. And so having taken such a resolve in his mind, what Bhagavan did was, he first coronated Yudhishthira as the king in Hastinapura. And later on, he protected the child in the womb of Uttara,
which was the only seed of the Pandava race, when it was being attacked by the Brahmastra of Ashwatthama. And he made Yudhishthira perform 3 Ashwamedha yagas and made him live very happily. And Bhagavan also lived very happily in Dwaraka along with all his consorts by following the path of the Veda, by following all the Grihastha dharmas. And by following the Sankhya Yoga, he remained unattached to all these worldly pleasures. And because of his beautiful smile, his beautiful form and his sweet words, he gave joy to all his consorts and also all to the people of Dwaraka. And having spent many years like this, at the end of it, Bhagavan developed dispassion for all the worldly pleasures. And Sri Shuka says here, if Bhagavan himself developed dispassion for all the worldly pleasures, then how could a man who wishes to attain Krishna ever get attached to these worldly pleasures? And so, as Krishna was now living in Dwaraka in this manner, one day what happened? All the Yadu Kumarakas, the Bhoja Kumarakas, all the children of Krishna, they were all playing together. And it happened that they earned the displeasure of the rishis there, and the rishis cursed the Yadava Kula to be destroyed. And Sri Shuka says, Bhagavan Mata Kovidaha. They cursed in this manner only because they knew the will or sankalpa of Bhagavan. And after a few months after this curse had happened, all the Yadavas and Vrishnis, they went in their chariots to the Prabhasa Kshetra, and they took bath in the Prabhasa Tirtham, and they propitiated all the Devas, the Pitras and the Rishis through the waters from their Prabhasa Tirtham, and they gave lot of charities to all the Brahmins. They gave lot of cows, Bhumi Dana, Swarna Dana, and also Vastra Danam, and then they gave them lot of chariots, elephants and all that, and they all prostrated to them by falling on the ground. And after having done all this, they offered it all mentally to Krishna as Krishnarpana. And Sri Shuka says, Go Viprartha Savaha. That is, the Yadavas were such that they had the cows and the Brahmins as their very life, and that is why they did all these charities. And with this ends the 3rd chapter, and the further story Uddhava narrates in the 4th chapter. So this is the content of the 3rd chapter that we learned today. So let us meet in the next session while we learn the 4th chapter. Radhe Radhe.